गुड मॉर्निंग ऑल. आज आपण झू 101 ॲनिमल डायव्हर्सिटी 1 मध्ये युनिट सेकंड बघणार. ओके, वी आर स्टार्टिंग युनिट सेकंड, फायलम पोरिफेरा. Okay, here we have to study the poriferans, means the sponges. Okay, it is a beautifully colored sponge. We are observing beautifully colored sponge, which is commonly called bath sponge. Okay, the sponge we used for many cushioning purposes is the animal. First of all, जो भी स्पंज हम देखते हैं या फिर अभी तो सिंथेटिक स्पंज आ रहे हैं, but the in old days the sponge are used to cushion the many objects like the sofa or the seats of our bikes or the cars, etc., etc., the vehicles. Okay, first of all we are going towards the taxonomy of the phylum Porifera. It is the first phylum which belongs to the true animals. Okay, is the first phylum which belongs to the animals. Okay, the poriferans comes from the kingdom Animala. Okay, Animalia is called the Metazoa. Okay, advanced organisms. The we can say the animals. The subkingdom Parazoa, which lacks tissue, which are which doesn't have the tissues, but still there are some cells are there. Okay, cells present here, लेकिन टिश्यू नहीं बना है अब तक. मीन्स दे हैव द tissue level of sorry, they don't have the tissue level of organization. Body organization tissue जैसा नहीं है. Then phylum Porifera. The word Porifera itself says they are the pore bearing organism. Pores bearing, yeah, which have the pores on their body, small holes on their body. उनकी बॉडी पे बहुत सारे छेद इनको दिखते हैं. Okay, hence called the poriferans. Now these are the simplest of all organs. Okay, सबसे simple, सबसे first animal है, simplest है. They contain some specialized cell, but no longer or no other organization level is there. Okay, tissue level of organization is not found in the porifera. Cells है लेकिन वो tissue नहीं बनाते हैं. The all these animals are aquatic. Okay, all these animals are aquatic, mostly marine, and some are the fresh water. Okay, most of these animals or the poriferans, which are commonly called the sponges, are marine organisms which lives in a salt water. Okay, found in ocean, seas, etc., etc. Salt water bodies में ये दिखते हैं. The saltwater sponges are brightly colored. जो salt water है वो brightly colored है, उनमें बहुत सारे color variations इनको दिखते हैं. While those sponges which lives in the fresh water are small and dull green colored. Here the two pictures are given. One is marine sponge, which is brightly or bright red colored, while second one is dull green colored freshwater sponge. Okay, these sponges found in the water, mostly marine, and sometimes it also found in the freshwater sponges. In our region, that is in the Nandurbar district, we have some freshwater sponges in some lakes. जो lakes है, which are found in the which are situated in the तरोदा तहसील. तरोदा तहसील में बहुत सारे लेक्स है, उसमें ये फ्रेश वाटर स्पंजेस भी कुछ दिखते हैं. Okay, which are small dull green color, which are small and have the dull green color. Okay, then they have the size about 2 meters to 2 centimeter. Okay, they can form a huge size of 2 meter, and smallest one is of 2 centimeter. 2 मीटर से 2 सेंटीमीटर तक भी होते हैं. As we said, the poriferans means the pore bearing organism. Poriferans means the pore bearing organism which have holes on their body. उनकी बॉडी पे बहुत सारे छेद होते हैं.
through that pores the water enters inside the body, and that water brings food and oxygen along with it. इस वाटर के साथ इनको फूड और ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई होता है. Okay, means the demand of food and demand of oxygen is maintained, or we can say is bring about by this water, and water enters through these minute pores present on their body. के बॉडी पे जो भी है उस पे ये उसमें से एंटर होता है, एंड the organism feed on that food particles which are present in the water में जो भी food particle है उन पे feed हो रहा है by filter feeding mechanism. Okay, the water enters through the pores, it get filtered, the food material get absorbed, and the remaining water is thrown out by a large opening present at the top called the osculum. Okay, there is a one opening, large opening called the osculum, which is present at the top where excess water get leave. Okay, जो जो भी excess water है वो बाहर फेंका जाता है by the osculum. Okay, the अब हमने बोला है कि दीज आर दी फिल्टर फीडर्स है, तो इनके बॉडी पे जो होल्स है उसमें से वाटर एंटर हो रहा है जिसमें फूड और ऑक्सीजन है, डिजोल्व ऑक्सीजन और फूड इन द फॉर्म ऑफ phytoplankton, some of the parts of the some of the small plants. Okay, all these plant material or the uh, decomposed material or the some of the tissues of the plant get absorbed in that the cavity, or we can say the in the body cavity. Okay, and that contains the food material which is absorbed in the body cavity, and remaining water get expelled out through this large opening called the osculum. Okay, it is the structure of an organism. इसमें हम देख रहे हैं diagrammatic presentation of the organism. The organism is attached to the substratum. Okay, कुछ भी substratum हो सकता है. It may be a rock, it may be a stones, etc., etc. Okay, there is a vase shape organism. यहाँ पे हमको एक ब्यूटीफुल जैसे वास होता है हमारा, वास के जैसा ये दिख रहा है. इसमें बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट है. ओके, जिसपे बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट है. थ्रू दैट पोर्स द वाटर एंटर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ओके, अंदर हमको कैविटी भी दिख रहा है. ओके, द बॉडी कैविटी हमको दिख रहा है यहाँ पे. ओके, तो ये जो स्मॉल पोर्स है इसके थ्रू वाटर एंटर कर रहा है. देयर इज अ इनकमिंग वाटर फ्लो. Incoming water flow enters through the pores, it comes into the cavity, and where inside the body the food material and oxygen get absorbed, and remaining water get out through the osculum. Osculum से जो outgoing water भी हमको दिख रहा है. Again, they have some specialized cells like choanocytes, okay, or the pore cells. Choanocytes are the specialized cells. Then they have spicules, which forms the we can say their skeletal framework of an organism formed by the spicules. Okay, spicules, which are some of the hard structure found in the body of the sponges. Sponges के body में ये दिखता है. Okay, it is the diagrammatic presentation. On your right side there is a brilliantly yellow colored organism is there, where we can easily see the pores, or sorry, the large opening called the osculum. यहाँ पे हम easily osculum देख सकते हैं. But the pores, small pores are not visible in the picture. Small pores जो है body पे जो pores है वो हमको picture में नहीं दिख रहे हैं. Okay, हमने यहाँ पे बताया है कि कैसे वाटर एंटर कर रहा है. इनकी बॉडी पे बहुत सारे पोर्स है. इस पोर से वाटर एंटर होता है जो बॉडी कैविटी में जाता है. बॉडी कैविटी में जाके वाटर में से फूड और ऑक्सीजन जो है वो निकाल लिया जाता है, और बचा हुआ पानी जिसमें अभी
वाटर या फूड नहीं है वो ऑस्कुलम से बाहर भेजा जाता है। ओके, इतना हमको पता हो गया। देन is through this incoming through these pores the water gets in and get out with the osculum। okay, water इन कैसे हो रहा है, कैसे आउट हो रहा है, ये हमें आरो से भी दिखा दिया अभी। ओके, इट इज द ऑस्कुलम, ओके, जो हम पिक्चर में देख रहे हैं। ओके, एंड द स्मॉल पोर्स आर नॉट विजिबल हियर। It is the animation where the water current is showing how the water enters and how it becomes or how it gets expelled out। okay, sponges में हम ये देखते हैं। यहाँ पे एक ऑस्कुलम भी दिखाया गया है स्लाइड में पिक्चर। okay, now we are going to the general characters of an organism। when we are going to study the general characters, the organism body is asymmetrical, it doesn't have any symmetrical। okay, इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं है। ऑर्गेनिज्म एक कोई भी किसी भी एंगल से या फिर हम बोल सकते हैं किसी भी एक्सेस से सिमिलर पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए हम उनको कह रहे हैं these are the asymmetrical organism। the organism doesn't have any symmetry, they are sessile, okay, which get attached to the rocks or we can say the substratum। okay, the adults of these puriferans are sessile, which remains attached to the substratum। it may be rock, it may be a log found in the water body, it may be some stones found in the water body, etc, etc। okay, but generally we can say they remains attached to the rocks। they are they cannot move। okay, but the larvae of these poriferans are free swimming। okay, free swimming larvae are there and this larval stage is called as diplurula। okay, diplurula larvae can move from one place to another place। if the organism can't move from one place to another place, then it is not the animal, but its larval stages move from one place to another place, hence they are put into the kingdom Animalia। okay, but the adults are sessile, they remains attached to the substrate। They get reproduced by the fragmentation। okay, by fragmentation, if a piece of an organism get break off, it get regenerate into a new organism, or they can form a new sponge। okay, fragmentation is a type of asexual reproduction where the piece of the organism get break off and it forms a new sponge। जैसे नया ऑर्गेनिज्म, जैसे पुराना ऑर्गेनिज्म था उसके जैसा ही नया ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंटेशन से भी बन सकता है। देन the sponge body structure, inside the body cavity of sponge there is a hollow structure, and that hollow structure or the hollow cavity is called as the spongocele। उसको हम बोलते हैं spongocele। the seal is the cavity enclosed by a sponge called the spongocele। spongocele seal is a cavity and it is formed by the sponge, hence called the spongocele। okay, बॉडी कैविटी जो है हॉलो है, जो स्पंजोसिल जिसको हम स्पंजोसिल बोलते हैं। दे हैव टू सेल लेयर। okay, they have two cell layer, it is outer epidermis and inner is endodermis। outer layer हम epidermis बोलते हैं और inner endodermis बोलते हैं। okay, but these two cell layers doesn't form any tissue, वो टिश्यू नहीं तैयार करते हैं। दो सेल लेयर है लेकिन टिश्यू नहीं करते थे। बट दीज सेल्स आर लूजली एग्रीगेटेड टू ईच अदर, उनका एग्रीगेशन है। ओके, नॉट अटैचमेंट। ओके, लूजली एग्रीगेटेड है, एक जगह पे जमा हुए हैं, चिपके नहीं है। ओके, लूजली एग्रीगेटेड टू फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ अ ऑर्गेनिज्म। inside this
epidermis and endodermis, a jelly-like material is present, which is called the mesenchyme. ये जो दो सेल लेयर हम बोल रहे हैं, इनके बीच में एक मेसेनकाइम नाम का जेली जैसा स्ट्रक्चर रहता है। जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट बिटवीन दिस सेल लेयर कॉल्ड द mesenchyme. Mesen in the middle. Okay, chyme means tissue. Mesenchyme is there. Okay, material is there, which is a jelly-like material. द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे हम देख रहे हैं अभी स्पेशलाइज सेल्स भी देख रहे हैं। ओके, यहाँ पे स्पेशलाइज सेल भी देख रहे हैं। ये स्पंज का स्ट्रक्चर है लेफ्ट साइड, और राइट साइड में हम एक सेल देख रहे हैं, सिंगल सेल क्वाइनोसाइट्स। इसके ऊपर बहुत सारे पोर्स दिख रहे हैं। इज द एपिडर्मिस, आउटर लेयर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एंड द inner layer is called as endoderm. Okay. On epidermis, there are some pores are seen, which are visible in a pink color. Pink color में हम देख रहे हैं। एक पोर से हमने, इन पोर से हम एरो भी दिखा रहा है, which shows the water current. Okay, water flow from outside to the inside. Okay, it is a cross section of an organism. एक स्पंज का एक क्रॉस सेक्शन है। ओके, जब हम एपिडर्मिस देखते हैं तो उस पर बहुत सारे को पोर्स दिख रहे हैं। इस पोर से वाटर एंटर होता है जो बॉडी कैविटी में आता है, जिसको हम स्पोंजोसील कह रहे हैं। ओके, एंड आफ्टर एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड फूड मटेरियल, दैट वाटर व्हिच गेट डिस्चार्ज टू द ऑस्कुलम, ऑस्कुलम से बाहर जा रहा है। नाउ इन बिटवीन द epidermis or the outer layer and inner layer, there are some other cells are there, some cells are there. Okay, these cells are loosely accreted, and both these layers are filled with a jelly like mesenchymal material. के बीच में mesenchymal material है। Along with that, they have a specialized structure called spicules, okay, which are hard structure which gives the skeletal framework to the organism. Skeletal framework भी देता है organism को। okay, इसका basic framework भी provide करता है organism। okay, then there are some cells, specialized cells, which are line the inner you can say the spongocoel. okay, स्पॉन्जोसील जो है, स्पॉन्जोसाइल के अंदर के साइड को कुछ स्पेशलाइज्ड सेल दिख रहे हैं। दीज आर कॉल्ड एज क्वाइनोसाइट्स। द क्वाइनोसाइट सेल्स लाइंस द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी एंड कैप्चर फूड। ओके, अब हमको पता हो गया कि क्वाइनोसाइट सेल जो है वो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में प्रेजेंट है, जो फूड कैप्चर करते हैं। ओके, then some of the amebocytes, the amebocytes are also there, which which digest and distribute the food into the organism body. okay, organism के बॉडी में ये डाइजेस्ट हुआ फूड जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। okay, पहले तो डाइजेस्ट करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। okay, now the choanocytes which are lining the gastrovascular cavity, they capture the food which comes through the pores. okay, pore से हम बोल रहे हैं, pore से क्या आ रहा है, वाटर करंट आ रहा है। pore से वाटर करंट आ रहा है, वो वाटर करंट में फूड भी है और ऑक्सीजन भी है। okay, जो फूड मटेरियल है, वो फूड मटेरियल ये स्पेशलाइज्ड सेल्स जो क्वाइनोसाइट सेल्स है, ये क्वाइनोसाइट सेल्स फूड को कैप्चर करते हैं। ओके, तो फूड कैप्चर करने के लिए ये क्वाइनोसाइट सेल्स में स्पेशलाइज्ड टेंटेकुलर स्ट्रक्चर्स आर देयर। टेंटेकल्स लाइक स्ट्रक्चर्स उसमें प्रेजेंट होता है, और वो टेंटेकल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फूड को पकड़ता है। देयर आर सम पार्टिकल्स लाइक फूड पार्टिकल्स है, वो फूड पार्टिकल्स उसको अटैच होते हैं। फूड पार्टिकल्स बाद में माइग्रेट किए जाते हैं। ओके, एंड choanocytes provide that food to amebocytes, okay, where it get digested,
जहाँ पे वो डाइजेस्ट होता है और बाद में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ऑर्गेनिजम्स। ओके, गॉट इट। ओके, फिर से हम बोल रहे हैं इफ वाटर करंट कम्स टू द पोर्स, पोर से वाटर करंट एंटर हो रहा है स्पंजोसिल में, जिसके साथ फूड मटेरियल है, वो फूड मटेरियल जो लाइनिंग है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के, उसके ऊपर जो कॉयनोसाइट सेल्स है, वो कॉयनोसाइट सेल्स कैप्चर करते हैं, जिसको चिपक जाता है वो फूड मटेरियल फैगोसाइटोसिस के थ्रू फूड पार्टिकल जो है वो सेल के भीतर एंटर करते हैं, और वो जो फूड मटेरियल है बाद में ट्रांसफर किया जाता है अमीबोसाइट्स को। अमीबोसाइट सेल्स क्या करेंगे, इसको डाइजेस्ट करेंगे और जहाँ पे ज़रूरत है एनर्जी की वहाँ पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, देन दी स्पेशलाइज्ड सेल्स, there are specialized cells, the choanocyte cells, which is commonly or otherwise called the collar cells. The choanocyte cells sometimes called the collar cells. The choanocytes lines inside the body cavity called the spongocoel, which have a flagella that spin to pull in water and food. फ्लैजेलम क्या होती है, स्पिन होती है, जिस वजह से वाटर से उनको फूड जो है आसानी से मिल सकता है। द कॉलर ऑफ द कॉलर ऑफ द कॉयनोसाइट्स captures or traps the planktons, the plant material which is present in the water. Okay, इसकी कॉलर जो है वो पहले जो टेंटिकुलर स्ट्रक्चर हमने देखा था वो प्लैंकटन को कैप्चर करता है, ट्रैप करता है, देन इट गोज टू द अमीबोसाइट्स। ओके, इट इज सीन इन दी this structure also. Okay, here we are studying we are seeing the water which enters to the pore, पोर से वाटर आता है, कैविटी में जाता है, कैविटी में हमने देखा है कि क्वाइनोसाइट्स है, क्वाइनोसाइट्स क्या करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और बाद में अमीबोसाइट्स को देके अमीबोसाइट्स वहाँ पे डाइजेस्ट करेगा फूड मटेरियल को और डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ओके, दिस इज सिंपल फीडिंग। Then there are other specialized cells, the amebocytes. The amebocytes pick up food from the choanocytes. Choanocytes ये food लेगा, digest करेगा, it finish the digestion and move to the mesenchyme and take food to the other cell. जो mesenchyme है, जो jelly like हमने बोला था jelly like material प्रेजेंट है, उसमें से मूव होके जहाँ जहाँ फूड की जरूरत है वहाँ पे ये पहुँचाता है। But the digestion of food and the distribution of food is done by the amebocyte cells, which are present inside the body, inside the we can say the epidermis and the inner cell layer. Okay, epidermis से एक्सटर्नल सेल लेयर से और इनर सेल लेयर में जो मेसेनकाइम है उसमें प्रेजेंट होते हैं, उसमें मूव होकर ये फूड मटेरियल सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, here are again some figures. Yellow tube sponge is there, Aplycina fistularis. In Aplycina fistularis we are clearly seeing the pores which are not visible from the outside but seen from the inner view. Inside से हमको दिख रहा है, and a large osculum is there, large opening is there called the osculum. यहाँ पे भी हम वही बोलना चाह रहे हैं कि waters enters through the pores which comes into the central cavity. The central cavity from the inner side is lined with the some cells or the choanocyte cells which are attached to the amebocyte cells. Okay, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो वाटर में फूड मटेरियल है क्वाइनोसाइट्स के जो फ्लैजेलम है वो स्पिन करेगा, उसके बाद कॉलर जो है वो पकड़ लेगी फूड को, विच इज़ अ टेंटेकुलर स्ट्रक्चर। कॉलर पकड़ के क्या करेगी, फूड को एनगल्प करेगी, जो अभी क्वाइनोसाइट में आएंगे, क्वाइनोसाइट से वो ट्रांसफर हो गए अमीबोसाइट सेल्स में, अमीबोसाइट सेल्स वहाँ पे उसको कैप्चर करेगा, फूड को डाइजेस्ट करेगा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि वो मेसेनकाइम में फ्लो हो सकता है, मेसेनकाइम में फ्लो होके डिस्ट्रीब्यूट करेगा जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ। ओके,
Now the skeletal structure. The skeleton made of network of protein fiber called the spongy. Okay. In case of sponges, there is a skeletal structure which is made up from the spongin fibers. Protein fibers are just called spongin होते हैं. They form spicules. These spicules are hard spear or star-shaped structure which are made up from the calcium carbonate or silica. ओके. स्केलेटल नेटवर्क बन रहा है प्रोटीन फाइबर से. प्रोटीन फाइबर्स एक दूसरे को अटैच रहेंगे और उसके साथ ही एक अदर स्केलेटल स्ट्रक्चर है जिसको बोल रहे हैं स्पिक्यूल्स. स्पिक्यूल्स आर हार्ड. ओके. हार्ड स्पीयर्स है या फिर स्टार शेप स्ट्रक्चर्स है. ओके. हार्ड स्पीयर्स और स्टार शेप स्ट्रक्चर विच इज मेड अप फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका. सिलिका से बनता है या फिर लाइमस्टोन से. तो ये इसको क्या देगा, स्केलेटल फ्रेमवर्क देगा, स्केलेटल सपोर्ट देगा. मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म गेट अपराइट इन दी वाटर. वाटर में अपराइट रहने के लिए या फिर शेप अटेन करने के लिए इसको चाहिए. स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी gives us shape and also gives the, you can say, the protection from the हार्ट इंजरीज और ट्रॉमा. ओके. जो भी इंजरी होनी है उसके लिए भी ये इजीली उनको प्रोटेक्ट करता है. These are the sponges, sponge skeletons. Okay, the spongin, which is the protein which makes a frame network. Okay, spongin है जो नेटवर्क बना रहा है. Spongin fibers है. Then there are some spicules, silica spicule and limestone spicule. Silica spicules are made from the silica, means the glass. Glass के जैसे दिख रहे हैं ऊपर में हम देख रहे हैं silica spicules. And limestone spicules are the spicules which are made from calcium carbonate. Okay. ये नेटवर्क इन सबको जोड़े रखता है और स्केलेटल स्ट्रक्चर जो है वो तैयार होता है. दिस स्पंज स्केलेटन्स यहाँ पे देख रहे हैं. स्पिक्यूल, विनस फ्लावर बास्केट इज अ स्पंज. ओके. इट इज अ कॉमन नेम फॉर द विनस फ्लावर बास्केट. ओके. कॉमन नेम है. अगर हम देखेंगे तो ये ऑर्गेनिज्म ऐसा दिखता है. Okay. When it get dead, its skeletal framework can be easily seen. इसका skeletal framework हम easily देखते हैं Venus flower basket का. Okay. Then reproduction. Sponges can regenerate, regrow. Okay. Hence they shows the asexual type of reproduction. The sponges can regenerate or regrow lost body part through mitotic cell division. Okay, sponge जो भी पार्ट टूटा है वो फिर से तैयार होता है by the mitotic cell division. Here the simple, we can say, the direct division happens. Okay, the sponges also reproduce asexually by budding method. A bird comes up from the lateral side of an organism. एक आधी lateral bird तैयार होती है जो bud off होती है और वो bud फिर से नया organism grow कर सकती है. Okay. जो पहले regeneration बोला है हमने, in which the part which get destroyed or we can say get broken down from the body can get reproduce, can grow, and in sometimes the sponges can reproduce by budding. एक आधी बर्ड आएगी जो टूट के नया ऑर्गेनिज्म भी तैयार कर सकती है. In sponge reproduction, we have to keep in mind that the sponges are hermaphrodite. They can produce both gametes, that is male and female gametes. Okay. जब हम sponge reproduction देख रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि they are hermaphrodite. Okay, means the both the sex organs are present in a single organism. Single organism में दोनों भी क्या है, reproductive organs present है. Hence it can produce egg as well as sperms. Okay, and by using that egg and sperm, by the fusion of egg and sperm, they can reproduce new organism also. Okay, sponge reproduce sexually by releasing egg and sperm into the water
inside water that sperm and egg fuses and fertilizations take place, and due to if the fertilization happens, then there is a formation of zygote takes place, and that zygote gets reproduced into the new young one. Okay, sponges reproduce sexually by releasing egg and sperm into the water from the osculum. osculum से ये egg और sperm जो है वो बाहर water में आएगा. The cross fertilize each other's eggs. Okay, fertilization is of cross type, means the egg of one individual get fertilized by the sperm of other organism. Okay, जो एक स्पंज है उसके स्पर्म्स दूसरे स्पंज के एग को फर्टिलाइज करते हैं. Okay, means sexual reproduction is there, but it is outside the body, hence we can say the external fertilization is there. And this external fertilization is of cross type, where the sperm of one individual fertilize egg of other individual के एग को वो फर्टिलाइज करता है और आउटसाइड दी बॉडी है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्यों? क्योंकि एक इंडिविजुअल का स्पर्म दूसरे इंडिविजुअल के एग को फर्टिलाइज कर रहा है, इसलिए क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो गया. और आउटसाइड दी बॉडी हो रहा है, इसलिए एक्सटर्नल भी हो गया. ओके, मीन्स इट हाउ द एक्सटर्नल क्रॉस फर्टिलाइजेशन. एक्सटर्नल है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी है. Okay, in picture we are seeing the sponge which is releasing eggs and sperm. Okay, egg और sperm कैसे रिलीज होता है ऑस्कुलम से, वो दिखा रहा है. जो हमको व्हाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है, इट इज अ एग एंड sperm which get released through the osculum of the sponge. स्पंज के ऑस्कुलम से बाहर रिलीज हो रहा है, वाटर में आ रहा है. वाटर में हम दूसरे भी ऑर्गेनिम्स के एग्स और स्पर्म होंगे, तो उनसे ये फ्यूज होगा और क्रॉस फर्टिलाइज होगा. ओके, these sponges can survive in harsh conditions. Okay, when to survive in harsh conditions, they forms a specialized bird called the gemmules, which are specialized bird which made to survive harsh weather. It may be hot or cold. The gemmules can withstand all hot as well as cold condition. gemmules जो है वो किसी भी हॉट कंडीशन में या फिर कोल्ड कंडीशन में ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखते हैं. एंड दैट जेम्यूल गेट बर्ड ऑफ एज अ न्यू यंग वन, और वी कैन से न्यू ऑर्गेनिज्म. न्यू ऑर्गेनिज्म के जैसा वो क्या होगा, विथड्रॉ होगा. ओके, the gemmules. The gemmules are the specialized birds which made to survive harsh weather like hot or cold, which contains the food, amebocytes and protective covering of spicules. जिसमें फूड भी होता है, अमीबोसाइट सेल्स भी होते हैं. हमने देखा है कि जो क्या करते हैं, फूड कैप्चर करते हैं और फूड को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट, डाइजेस्ट और डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं. ओके, एज वेल एज दे हैव प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ स्पिक्यूल्स. स्पिक्यूल्स भी है इसमें. ओके, जो उसको क्या देंगे, स्पेसिफिक जो शेप है अटेन करने के लिए मदद करेंगे. These gemmules are released when the sponges die. जब स्पंज मरने लगता है तो ये gemmules जो है वो क्या होते हैं, रिलीज होते हैं. The gemmules can resist the desiccation, drying out. We know the organism is aquatic, which lives inside the marine water or sometimes in the fresh water also. They produce these gemmules, and gemmules get resist the desiccation condition also. ड्राइंग आउट, कंप्लीट ड्राइंग आउट भी हो जाता है वाटर बॉडी का, तो स्पंज मर जाएगा. अब जब कंप्लीट ड्राइंग आउट हो रहा है, स्पंज मर रहा है, तो वो क्या करेंगे, जेम्यूल्स तैयार करेंगे. जो जेम्यूल्स व्हेन इफ द पॉसिबिलिटी ऑफ वाटर ऑकरेंस हैपन्स, अगर फिर से पानी आता है एक वाटर बॉडी में, तो उस टाइम पे वो फिर से नया ऑर्गेनिज्म तैयार. They resist the desiccation, drying out, and becomes adult sponge
व्हेन द कंडीशंस बिकम फेवरेबल, फेवरेबल कंडीशन जब आएगी तब ये जेम्यूल्स नया ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे, जिससे नया ऑर्गेनिज्म तैयार होगा और हमको नया ऑर्गेनिज्म देखने मिलेगा। ओके, द जेम्यूल फॉर्मेशन इज अ असेक्सुअल मोड ऑफ क्या है, रिप्रोडक्शन है। जेम्यूल से भी ये रिप्रोड्यूस होता है। दीज आर सम sponges. Here is a branching tube sponge, which is a tube-like and have many branches. Is the branching tube sponge is called. उसको हम ब्रांचिंग ट्यूब स्पंज भी बोल रहे हैं। ओके, यहाँ पे हम देख रहे हैं येलो कलर के ऑस्कुलम भी दिखते हैं। ओके, एंड लैवेंडर कलर बॉडी इज आल्सो सेम। ओके, ये है marine water sponge, because we already said that the bright colored sponges are of marine water। okay, bright colored जो sponges है वो marine water के होते हैं। then stovepipe sponge, जो स्टोव पाइप होता है उसके जैसा अपीयरेंस है, इसलिए इसको हम स्टोव पाइप स्पंज भी बोलते हैं। हियर all we are seeing the osculum but not the pores present on their body। pores नहीं देख सकते हैं, which are very small। okay, ये है stovepipe sponge। there are many sponges, okay, which have brilliant color and shape। a vast sponge, okay, जो हमारे घर में फुलदानियाँ होती है उसके जैसे ये स्पंज है, which is a vast sponge। वेस्ट शेप है इसलिए उनको वास्ट स्पंज भी बोलते हैं। देन इज अ बैरल स्पंज विच हैव अ शेप ऑफ अ बैरल, बैरल के जैसा शेप है इसलिए इसको बैरल स्पंज भी बोलते हैं। ऑल दीज आर दी स्पंजेस फ्रॉम दी वाटर मरीन वाटर बॉडी, मरीन वाटर बॉडी के स्पंजेस है। देन बॉल स्पंज विच हैव अ शेप ऑफ अ बॉल, बॉल स्पंज हम देखते हैं। These ball sponges are found on the beaches, beaches पे भी ये मिलते हैं कभी कभी। ओके, एंड बाथ स्पंजेस की एक ऐसी खासियत है कि इसके जो पोर्स है, ओके, जो स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी कैन बी इजीली सीन व्हेन वी ऑब्जर्व इट इन क्लोज। ओके, क्लोजली अगर हम देखेंगे तो हम इसके आउटर ओपनिंग्स भी देख सकते हैं। ओके, और बाथ स्पंज विच इज़ इन द सैंड, सैंड में हम जो देख रहे हैं उस पर हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन जब हम सैंड रिमूव करेंगे इसके वाटर में, वाटर से सैंड रिमूव करेंगे तो हमको इसके एक्सटर्नल ओपनिंग्स भी दिखते हैं। एंड ऑस्कुलम इज ऑल्सो देयर विच इज एट द सेंटर, सेंटर में हम इसका ऑस्कुलम भी देख रहे हैं, a large opening outside the body। okay, it is a ball sponges। ये बहुत सारे स्पंजेस हमको देखने हैं। ऑल दी स्पंजेस आर यूजफुल टू अस। द कॉमन बाथ स्पंज जो हम यूज करते हैं वो भी ऑर्गेनिज्म है, इट्स कॉल्ड द साइकॉन और स्काइफा, स्काइफा या साइकॉन जिसको हम कॉमन बाथ स्पंज बोलते हैं, वो भी हमको देखना है। इज ऑल अबाउट दी स्पंजेस पोरीफेरा, इसके जनरल कैरेक्टर्स और जो भी रिप्रोडक्शन है, फीडिंग है, कैसे करता है, ये हमने भी देखा है। ओके, इट इज अ रोप स्पंज, रोप लाइक स्ट्रक्चर है और स्पंज ही है इसलिए रोप स्पंज हम इसको बोलते हैं। ओके, रोप स्पंज भी है। ऑल दीज आर दी स्पंजेस, ये सभी स्पंजेस हम देख रहे हैं विच हैव ब्यूटीफुल कलर। okay, which have beautiful color means all these are the marine sponges। if it have a dull green color then it is a fresh water sponge। okay, अगर dull green है तो उसको हम fresh water sponge बोलेंगे। dull green नहीं लिया है हमने। is also a sponge which is entangled with the jellyfishes nidarian। okay, nidarians में entangled है इसलिए ऐसा दिख रहा है। okay, all about the स्पंजेस। ओके, जो चीज़ नहीं समझ में आई है वो आप क्लासरूम में पूछ सकते हैं। ओके, सब लोग वीडियो देखें, उसको शेयर करें दूसरे स्टूडेंट से और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चैनल सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो इसको लाइक भी करना है और देखना भी है।
ओके। और अटेंडर सबको चैट बॉक्स में डालनी है, कुछ कमेंट्स हो या फिर कुछ क्विज क्वेश्चंस हो वो भी आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि उसके हम आंसर दे सकें। तो इज देयर एनी क्वेश्चन? इफ यस, प्लीज शेयर इन दी चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में शेयर कीजिए। ओके, स्टिल देन, बाय बाय।